हमने पूरी रात गाड़ी में गुजारी। बुरा हाल हो गया है, खूब अंधेरा है। अभी 4 बजे हैं, सामने मस्जिद है और खान ने वहाँ तहज्जुद पढ़ने चला गया। मैं यहाँ तहज्जुद पढ़ रही हूँ और बुरा हाल हो गया है लड़कियों, बुरा हाल हो गया है। एक होटल में जगह नहीं मिल रही थी। बस अब सुबह इंशाल्लाह कैलाश फेस्टिवल देखेंगे और रवाना होंगे। अल्लाह करे अब बैटरी रह जाए कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर सकूं आप लोगों के लिए। ना हमारे पास कपड़े, हमने सब कुछ अपर दीर होटल में छोड़ के हम इधर कैलाश आए थे। ओह गॉड, कोई चीज़ लेके नहीं आए हैं, कोई फ़ोन का चार्जर कुछ भी नहीं लेके आए। और अभी शुक्र है बूट में ये एक सूट पड़ा था जो सिकंदर ने सिया था, मुझे गांव में दिया था। अभी वो मैंने बदल लिया, पहन लिया, क्योंकि वो उन कपड़ों का तो सत्यानाश हुआ था। तो बुरा हाल है, बुरा हाल है। सर्दी से कुड़की बन गई हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल भी कम है और पेट्रोल अगर हम वो हीटर लगाएंगे तो हमें वापसी पे पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कैलाश से लेके अपर दिग तक कोई पेट्रोल स्टेशन भी नहीं है, या फिर चतराल तक। तो बहुत बुरी हुई, पर चले एडवेंचर हो रहा है। And now नाश्ता time. Just wake up, had our breakfast, and this is look sajji. It's a traditional food of KPK. So we did our nashta, and now we're going up there for the Kailash women dance. Candy making machine. जोड़ का बके, बना लो, बना लो. So here the Kailash women gonna dance here, and I think it's their religious activity, isn't it? Maybe their religious activities. We are here now waiting for Kailash women to dance, and then we're gonna run away. So 12-hour journey just to see their dance. That's all. Sick of the road. Yeah, we're really sick and tired of the road, and you know what, I really want to stay here and don't go back because it's another 12-hour journey. This is Chitrali Cab, and I just bought this. It's called Chitrali Cab and Kailash, and I just bought this. And I was supposed to buy some more stuff for kids for L and thing, but they were just for no reason so expensive. So I'm gonna buy that in Chitra. First he said 4,000 rupees, and then he said 8,000 rupees, and then he said 12,000 rupees. So three different prices. I get confused, and I say no. First you say 4,000, then you say 8,000, and then you say 12,000. So I say I'm not gonna buy from you. So I just bought this, and that was 1,000 rupees, which is about £5, I think. Yeah, about £5. Not bad. This is Kailash woman houses, beautiful, and a beautiful kid. They live like that. Oh, such a nice, cozy little small house. Oh, he's so beautiful. She's so beautiful. Look at him. He look like Kailashi man. Yo sarita bebe, we chitsa restaurant is say. Then ask me and blah blah blah. He come there, and I say okay. We number wala, and I say okay, give me your name. And I say okay, Kadir Kailashi. He said no, I'm Muslim. I say it's okay. Don't worry. I just want to remember you by this place. How Papa Khan look like? Kailashi Sheikh man. Yeah. That actually suits you, man.
And what's your name? Jafarullah. Jafarullah. That's like a Muslim name. No, Kailash name. Oh. Anyway, guys, they're beautiful people. I am everybody Kailash. Everyone is Kailash here. Well, they look like Pathan people. All of Kailash people look like Kashmiri people, like Afghani people. Yes, yes. Blue eyes, golden hair, fair skin. Same to same. Same to same. They're very friendly. So do come here, visit Kailashi people and make picture with them, see their dance. So stay tuned, I'll show you more dancing as well.
माय गॉड, अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी। फेस्टिवल ख़त्म हो गया, गाड़ी में आ गए हैं, 2 बजे है। अभी तो सारी दुनिया फेस्टिवल में है, हम बस जल्दी जल्दी से कुछ वीडियो बना के निकल आए हैं। और अब पेशावर तक तो 12 घंटे का रास्ता है और 16 घंटे का मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस तरह रास्ता ख़राब है। क्योंकि अपर दिर से हमें लगे थे 9 घंटे। तो अब हम अपर दिर में हमारा होटल बुक है, हम उधर जा रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह खैर खैरियत से ले जाए, क्योंकि बारिश शुरू हो गई और पता नहीं कि बारिश में कहीं ये रास्ते बंद ना कर ले। तो अगर रास्ता बंद कर लिया तो बस अल्लाह ताला खैर करे। एडवेंचर था पर बहुत ही बड़ा एडवेंचर। अब बहुत ज़्यादा फ़िक्र लगी हुई है कि कहीं रास्ते बंद ना हो जाएं, क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब हैं। तो बारिश हो गई है तो बारिश में सेफ्टी के लिए ये रास्ते बंद कर देते हैं। चले देखते हैं अल्लाह के हवाले।